सरकार लगा देगी 20 साल का बैन। जी हां, 20 साल का बैन। उससे पहले ही राहुल गांधी ने कर दी मीटिंग। दोस्तों, किताबें लिखना एक बहुत सामान्य बात है, कोई भी किताब लिख सकता है। इनफैक्ट कोई आदमी बहुत अनुभवी हो, कोई बहुत बड़े पद में रहा हो तो उसकी किताब तो बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि दोस्तों किताबों के जरिए ही तो हमें पता चलता है कि आज जो वर्तमान है, कल जब इतिहास बनेगा तो उसको किस तरह से याद किया जाएगा। किताब लिखना एक बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आप किसी से भी नहीं छीन सकते, लेकिन अब मोदी सरकार ये भी करने की तैयारी कर रही है। इस बीच राहुल गांधी ने किन लोगों से कर दी मीटिंग, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊं, लेकिन पहले आपके सामने एक इंपॉर्टेंट जानकारी रख देती हूं। दोस्तों, जनरल नरवणे की किताब, उस किताब के पन्ने और उन पन्नों में लिखी गई बातें इस सरकार को इस हद तक परेशान कर चुकी थी कि राहुल गांधी संसद में उस किताब को कोट ना कर दें। गलती से भी राहुल गांधी उस संसद में किताब के नाम पर जो भी बातें लिखी गई उस किताब के अंदर जनरल नरवणे द्वारा, अगर वो पढ़ ना दे, इस बात पर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। हालांकि उस किताब में क्या क्या लिखा था और जो उचित समझो वो करो कि क्या क्या राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, वो सब सबके सामने आ चुका है। लेकिन इस पूरे एपिसोड से सरकार चौकन्नी हो गई है। अब जानकारी ये निकल कर आई है दोस्तों कि भारत सरकार इस बात पर फैसला ले सकती है कि कोई भी आदमी जो सेना के बड़े पद में था या फिर कोई सरकारी बड़े पद में था, उसका 20 साल तक कूलिंग ऑफ पीरियड है। मतलब 20 साल तक वो कोई किताब नहीं लिख सकता। दोस्तों, कोई आदमी रिटायर होता है 60-65 की उम्र में, ठीक है, सरकारी पद में होगा तो 60-62 तक रिटायर होगा, तो मतलब 20 साल तक वो किताब नहीं लिख सकता। मतलब 80 साल तक तो दोस्तों आजकल कोई जिंदा भी नहीं रह पा रहा। मतलब सरकार एक ऐसे नियम पर विचार कर रही है जो प्रैक्टिकल ही नहीं है। सरकार ये कह रही है कि अगर आप सरकारी पद पे हैं तो आप बेसिकली किताबें नहीं लिख सकते। ये अपने आप में दिलचस्प इसीलिए दोस्तों कि इस पूरी किताब को लेकर मोदी सरकार के पसीने छुड़ा दिए थे राहुल गांधी ने। दोस्तों सोचिए, वो सरकार जो राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरों को ज्ञान देती है, जिसके मुखिया खुद सेना की वर्दी पहनकर उनके साथ दिवाली मनाते हैं, सेना के जवानों के साथ, वो एक किताब से इतना डर गई कि 20 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड पर विचार कर रही है। जहां तक बात है राहुल गांधी की दोस्तों, तो किताब तो उन्होंने देश तक पहुंचा ही दी। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने सेना के रिटायर्ड अधिकारियों से मुलाकात की। ये वो अधिकारी थे जो या तो सर्विस के दौरान चोटिल हुए या फिर अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। दोस्तों, सेना पर पॉलिटिक्स तो सब करते हैं, सेना के नाम पर वोट भी सबको चाहिए। मोदी अभी एक दिन पहले असम में थे, वहां भी सेना के नाम पर वोट मांग रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर भी, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी। लेकिन सेना से रिटायर्ड अधिकारी किस तरह की परेशानियों से जूझते हैं, किस तरह की मतलब दिक्कतों से उनको आमना सामना होना पड़ता है, उस पर कोई बात नहीं करता। राहुल गांधी ने उन अधिकारियों से बात की। की मीटिंग मेरी टेंट के साथ मुझे देखा होगा तो मेरे 5 गोली मिले। It is advocated. I lost my interest. Bullet through spine. It was 1994. Majorly, we have got two major issues. Ex-servicemen contributory health scheme (ECHS), which gives the health care system to the defense forces. You had raised it in standing committee on defense that we cannot leave our soldiers unattended like this if you don't give the funds. Yes. And thereafter we have launched a campaign all throughout the country, and 400 ECHS our teams have gone to collect the bills. So government has got worried why these people are collecting the bills. So they have issued instructions to the emails and instructions to all the hospitals not to give any bill. He's squad leader Sudeep. He's a doctor and also running a ECHS hospital. They are playing it a clever game actually. Earlier what they used to do, after every 2 or 3 months the payment used to come, so that hospital didn't have any problem in running all the things. Last 2 years what they don't give any payment since last 9 months, and ultimately they gave it on 31st of March, and you can't do anything, and everything, almost 30% of the amount what they give that goes back to the government. How does that work? Actually sir, you can't adjust that amount of money. Suppose if you want to buy something, you cannot buy it on 1st of April, because ultimately on 31st April the settlement of the bill takes place. So almost whatever they give, last year I received 3 crore at 5 PM on 31st of 2025. You can't do anything of that money. Ultimately 30% of that amount has to go back to the Ministry of Finance. That is happening since the last year. I don't understand why they're giving you that money just to take it back. Because the financial year is over. So that is the thing. It's being too clever. By They're just not giving the money. They're just not giving the money and not in time. How much is outstanding? So, for last 5 years, backlog has been increasing. 1st April 2025, the backlog was about 6,000 crores. And
expenditure. How much was it last year? They gave 7,000 crores. This year they gave 8,000 crores, but the backlog itself was 6,000 crores. So to do the expenditure for this current year, only 2,000 crore was left. So the backlog carry But forward. what happens to all these people who are sick? Sir, there are two major issues. One is that those who are sick, hospitals are not accepting them. They are empaneled hospitals. They say, we will not give you appointment, and they delay the treatment. And But if cancer treatment is delayed, then that's over. What That's is the over. treatment? And these are all service members. Current soldiers are covered by the military hospitals. They got nothing to do with us. These are all ex-servicemen, ex-soldiers who are entitled to this scheme. It's not my job to say where the government should mobilize the funds from. Governments can mobilize funds anyway. It is the intent. Central government health scheme, which is meant for the bureaucrats and others, that seems to have no shortage of funds. Why for the soldiers? First thing is that we should liquidate the carry forward liabilities of previous year and current year on 31st of March. That is the first primary thing. If that happens, then probably that 12,000 crores of next year may give little bit of Just walk across. functionality to ECHL. And secondly, cancer treatment should be very importantly cannot be stopped, because one cycle goes off, and if it is missed, then the therapy is gone. आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना है? There are two things, sir. First is the funds to be provided to ECHS, and second thing, sir, the ECHS is not fully well functioned. All problems are known to the people. This is the only thing which is helping the soldiers and officers of the retired people, and there are a lot of problems because of that. They don't get the proper treatment. So this system should be done properly, and funds, whatever is required, to be given to them. So after the service, they can be looked after. ECHS में जो सॉफ्टवेयर है उसमें हर मेडिसिन का नहीं है, तो डॉक्टर साहब अगर उसको पेन से लिख दिया करें कि भैया ये आप एलपी कर लो, ये आपका क्लेम, तो उनका जो पेन से लिखने का है नहीं आर्डर, तो वो क्लेम इंडिविजुअल उसको सर पे करता है अगर वो परचेज करेगा जो सिविल से लिखा हुआ दवा। और सर जैसे एक्सरसाइज कुछ लिखते, जैसे मेरा प्रोस्टेट का हुआ तो यूरिन लीक होती रहती है, तो इसमें बायो पे फीडबैक एक्सरसाइज बताई है, तो हमें बाहर से कराना पड़ रहा, तो ECHS से यहाँ से कई सिस्टम इज नॉट तो 55,500 रुपया, एक 50 to 60,000 से ज़्यादा हो। मेडिसिन सर जेनरिक ली जा रही हैं, थोड़ी सी अगर बेस्ट मतलब क्वालिटी के हों, तो क्योंकि वो जो हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो बोलते नहीं ये इनको रहने दो, आप मतलब अपना वो एलपी करो, बाहर से लो, तब आपको कामयाब हो। Important issue is the disability pension. These people have got disabled during operations or otherwise due to service conditions. Somebody is Siachen, their foot has got frostbite, this, that, everything. Lot of things are there, and their disability pension was tax-free from 1922 onwards. From the Income Tax Act 1922, under Section 60, they said it will be tax-free. The same provision of 1922, they were incorporated in 1961 Income Tax Act. So what disabled was given separate section relaxation, that 100% exemptions, and other disabled also given under different sections. This thing continued till today, sir. It will end at 31st March. Sir. Now the use of tax exemption, they've just taken it away in this finance bill, sir. How much money are they saving? There is some perception 50, 60 it is being given just like that. So not 103 years have passed and we are exempted from income tax. And certainly my senior veterans who have sustained amputations and all, now from 1st April we will be asked to pay income tax. Basic issue is that when it was carrying on for last 104 years, why should it be stopped? Everybody, whether invalidated out or retained in service or aggravated attributable to military services, they should continue to get it without any distinction. The Save ECHS campaign and Save Disability campaign is there, sir. Okay. It will be great, sir, if you can... Let us make it a target to get their job done. Sir.
Let's try and see if we can do it.